Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing good, fit and fine. So I'm back with another video. ये वीडियो था बहुत ही स्पेशल, not special I would say, but very excited for the video, for the vlog because it was the very first time I was visiting सर्वेद मंदिर एंड भाई मतलब इतनी ज़्यादा मेरे को था ना कि आई हैव टू गो टू दैट प्लेस, आई हैव टू गो टू द प्लेस. So we finally visited. I know it's thoda like being like living in the same city where it has been built and still not visited. Yeah, guys, that's a true fact. But कोई नहीं, finally me and my family members और हम लोग कोई नहीं गए थे क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर फैमिली जाती तो मैं भी जाती. तो गाइज इट वाज द वेरी फर्स्ट विजिट ऑफ आवर्स टू सर्वेद महामंदिर धाम. और भाई क्या एस्थेटिकली इसको क्राफ्टमैनशिप दी गई है इस मेडिटेशन सेंटर को. आई मीन वेरी अमेजिंग गाइज. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये थी कि आई वॉज नॉट नोइंग कि इतनी ब्यूटिफुल, मतलब ऑब्वियसली फ़ोटोज़ एंड ऑल तो है बट ऑल ओवर चीज़ें इतनी ब्यूटिफुल, इतनी ज़्यादा सुंदर, मतलब अमेजिंग गाइज. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ये हमारे खुद के शहर में है and it's like one of the most famous meditation center which was built and it was huge. मतलब huge नहीं, it was humongous I would say. और बहुत ही pretty है ये, चाहे वो बाहर से हो चाहे वो inside से हो. जो architecture थी इस पूरी like धाम की, it was very beautiful. You can see the craftsmanship, the architecture, the paintings, everything was very beautiful. सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स कि ये वर्ल्ड का बिगेस्ट मेडिटेशन सेंटर है विच इज़ अ वेरी प्राउड थिंग फॉर आवर पीपल. और जो एक लाइक द डिटेलिंग्स ऑफ द होल सर्वेद महामंदिर वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लिटरली गाइज. मतलब I know it has like took I don't know how many years to be to build this, but obviously it was all worth it. You can see, I mean, all that specifications and that craft and that art and everything was like speaking that yeah, I am the biggest meditation center. और ये जो आप बीच में मूर्ति देख रहे हैं वो किसी डिवोटी या किसी की नहीं है, ये एक मेडिटेशन एक आचार्य जी की है. उनका नाम है, लेट मी टेल यू गाइस जस्ट अ मोमेंट, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी इनका नाम था. और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू जो कहते हैं कि जिन्होंने सर्वेद महामंदिर का नींव रखा एज यू कैन से. सो दैट इज़ वाई उनकी यहाँ पे एक अच्छी खासी मार्बल से लाइक इट्स बीन डेडिकेटेड आई थिंक सो फॉर हिम. एंड बहुत लाइक हर वॉल पे देयर इज़ दिस मेडिटेशन का समथिंग लाइक प्रथम एंड द्वितीय एक होता है ना कि इट्स लाइक अ चैप्टर, द ऑल चैप्टर्स वर रिटन ऑन दैट वॉल. यू कैन सी that adhyay and pratham mandal. I don't like, obviously I was not able to understand those things, but itna samajh mein aa raha tha कि it was all the chapters of Sarveet meditations dham and all. 9 p.m. is the closing timing of this dham and we witnessed something very beautiful. So जब ये like जब धाम का क्लोजिंग हो रहा था ना and the lights were getting off, oh my god, the way they were like पहले एक first level का, second level का, third level का and the top most that lotus park thing was only light up and it was looking very beautiful guys, very beautiful. And it is one place to go definitely, and it's all for your like shoes and rack and everything for the cleanliness and like should also be maintained and proper security checking and all that सब कुछ चल रहा था. तो it was a very safe place to go, very beautiful place to go and must visit place to go and we loved it. I mean it was like कि एक bucket list की भाई वहाँ जाना है. I know it's a very small thing but yeah, it was like from a very long time we were like planning and we were not able to go
So see, you just saw how the lights were getting off. That was amazing. And that's all for the video, guys. Thank you so much. I love you. Please keep supporting me, keep subscribing, and I hope you like my vlogs, and I'll be updating on very, on a very fast pace, I would say. And thank you so much for everything. Please keep subscribing, keep loving me, and I love you for all the support and strength you give it to me. Thank you so much for it. Bye, take care, love you.